हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। एंड आज के इस हिस्टोरिक दिन पे लेट्स वेलकम सायन अगेन। हाय सायन, हाउ आर यू? Hi, ma'am. I'm good. How are you, ma'am? आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी। एंड एज I'm also प्रॉमिस्ड happy to be here. सायन को हम वापस लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे यार। मुझे लगा था कि लास्ट टाइम वी डिड अ वीडियो ना विद यू, तो मुझे लगा था कि यू addressed almost everything, but no, people still had a lot of questions. So Yes, yes. And today I'm here to address all those queries. यस, तो इससे पहले कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के पास अगर क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछना शुरू कर दो, वरना मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मेरे पास है क्वेश्चन आए हुए हैं। सर एक क्वेश्चन ना मैं फिर भी पूछना ही चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा। ये स्टूडेंट ने ही पूछा था मुझसे। अच्छा, किसी को अगर ये नहीं पता होगी सयान कौन है तो फिर क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग? Sayan is the CLAT PG topper of last year, and he secured AIR 6. तो एक क्वेश्चन है सयन, राधा ने पूछा है, एंड द Okay. क्वेश्चन इज द रिविजन स्ट्रैटेजी Hmm. without stucking in a loop of just repeating things but Right, not right. getting or remembering any of it। और ये सवाल ना मुझे बहुत सारे ही Mhm. अम, बहुत सारे ही लोगों ने So, पूछा है। addressing this, I हाँ, also face the same issue. I used to revise and then forget. And when I means sometimes the similar question would come in the mocks, and I would make the same mistake over and over again, although I revise them. So, हम्म, the best tip, according to me, to not to forget those, is to write it down somewhere. Means I would suggest you to make a pointer, a single pointer notes in your notebook हाँ of those हाँ, topics which you feel that you are not confident with. Make a हम्म, single pointer note in a notebook, and that will also help you for the last minute revision. And try to means I would suggest you to take a A4 size sheet or a larger big means art paper and write down making pointers, small pointer notes, which will help you in last minute revision. And every time you attempt a mock and you get a question, and suppose you already knew the answer to this question, but yet you went wrong. So हम्म। get back to that notes of yours, to the one pointer note, and check it if you have already written it there. If it's already written, then fine, revise it. If it's not written, then add it. I think परफेक्ट। this is the strategy. नहीं नहीं, और This is कुछ what the है? strategy should be. ठीक है, बहुत सारे लोग का यही है कि पूरा सिलेबस मैनेज कैसे किया, क्योंकि पिछले साल भी वैसे ही था कि सरप्राइज सब्जेक्ट्स तो आ Right. ही सकते थे। तो Mhm. मेजर्स माइनर्स कैसे Right. किए? हाउ डिड यू मैनेज द एंटायर सिलेबस? Okay. So first, before addressing this question, let's know what CLAT PG wants from us. So there is a difference between CLAT PG and AILET PG. Both of them ask different questions. AILET PG is focused on more on static part on your knowledge, and CLAT PG focuses on logical questions mostly. So even if you are not good with numbers or section numbers and case laws, which was the case for me, I was not good with numbers, but in logical questions I did well. So that is the thing. Means for CLAT PG, use your logic more than knowledge. So now coming to how to finish the syllabus. Yes, it's of course important to finish the syllabus because if you don't know the syllabus, you won't be able to answer any questions even with logic. ऑफ कोर्स। Yes. So for CLAT PG, you need not cover the entire syllabus like judiciary or any other competitive exams. So I would again say that look into the previous year question papers and attempt mocks. Attempt more and more mocks that will give you an idea of how CLAT PG asks you the questions. सर And if you इस analyze, हाँ, इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ रही हूँ बस। अच्छा, स्टूडेंट्स को ना अभी जुलाई में मॉक्स देने में डर बहुत लगता है, ठीक है? दे आर हम्म, स्केर्ड टू राइट मॉक्स बिकॉज अभी right, मार्क्स कम आते हैं, बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो हम्म, मार्क्स काफी कम आते हैं। अब क्योंकि मार्क्स कम आते हैं तो फिर और डिमोटिवेटिंग हो जाता है टू अपीयर इन हम्म, मॉक्स। बट हाँ, ये तुम्हारे साथ भी हुआ था। आई रिमेम्बर व्हेन हम्म, यू फर्स्ट स्टार्टेड गिविंग yes, मॉक्स यू वर गेटिंग समवेयर इन 40s, what है ना? is okay, right. हाँ, तो डिमोटिवेटिंग तो तुमको भी लगता होगा। हाउ डिड यू Mhm. ओवरकम दैट डिमोटिवेशन एंड स्टार्टेड गिविंग मॉक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग? So initially, why my score was low was that I attempted very less. I was fearing negative marking, and that's why I attempted only the parts that I knew.
and only those questions which I had read till that time. But Hmm. don't do that. I would say don't do that. Whatever you have read, try to attempt the entire paper. Even with logic, if you want, means if you can, use your own logic and common sense and try to answer the entire paper. So from that, I will come to another point, that is reading speed. You should have a very good reading speed for attempting mocks. Read newspapers, read editorials, and try to improve your reading speed first. And To recommend then reading novels at this point to increase reading yes, you speed. can do that, but it's better if you read editorials because that would cover your syllabus also. Read Exactly. those editorials related to laws. Means हाँ I used to read Hindu, and they हाँ would publish some Supreme Court's judgment in the form of editorials. हाँ. That would also help you in knowing the law, knowing the current affairs. And That's, even CLAT, I have seen that CLAT PG directly picks up passage from editorials हम्म. of the Hindu or the Indian Express. So ये there तो is no है. perfect time to attempt mocks. Yes, You you can have to start. start somewhere. Yes, you have to start because there's no end to the syllabus. हम्म. CLAT PG doesn't have a fixed syllabus, first of all. And हाँ secondly, you will never end it. You will find, means you will feel that still something is left. बिल्कुल. So keep revising side by side, I would say, and attempt mocks and mark those questions where you got wrong हम्म. and start from those questions only. Directly, you can Google that question and then from those questions, read the related portions, read the related judgments or any other subsequent provisions which is relating to that. Read all those. That's a very useful tip. That's a very very useful tip. तो ये वाली चीज तो याद रखना बेटा प्लीज. सेकंड क्वेश्चन है आर्या का. ये पूछ रहे हैं व्हाट वाज योर डेली स्केड्यूल लाइक, हाउ डिड यू डील विद बैकलॉग्स, बिकॉज Mhm. backlog is a real Right. problem at this point. Because when I started, I had a backlog of 6 months cases, judgments, हाँ. around 6 months. So how did you deal with that? How did you finish the backlog as Yes. well as continued your preparation and attending live classes? ये सब कैसे किया? Mocks भी देना है, live classes भी Mm, attend करना है, backlogs भी clear करना है, कुछ revision भी करना है. right. तो how did you manage all of that? Live classes, I would say you can skip those subjects which you're confident with. Like I was not confident in PIL and jurisprudence, so I attended those live classes. Hmm. But I was confident in constitution, so I skipped those classes. I only attended the important case law classes and other classes like strategy sessions and those with constitution. That Hmm. is how I managed time, means from those live classes, by skipping some of the live classes. And I also had to attend college in the morning. So कॉलेज के साथ भी that is पढ़ाई. also an issue with many of the students I know, यस. सो बैकलॉग managing क्लियर college. कैसे किया फिर सैन? Backlog. Yes. Regarding judgment, I would cover that in the webinar session in details. And for now, I would just say that I read 12 judgments from each month, 12 most important judgments from each month, and I tried covering two 2 to 3 months judgment in a single month. Like they say, in June, I covered the judgments of June itself and also January. In July, I covered the judgments. Means I covered the daily judgments. I used to follow, means you can follow any kind of YouTube channel or even Legal Edge comes with weekly judgments like this. You can follow those channels or you can read the newspapers or any source you want for the daily legal current affairs. हाँ. And for the most important judgments of the previous months, say for example in July, try to cover the judgments of July, daily judgments. Along with that, cover the judgments of February. In August, cover March and August like this. So in a month span, it is Hmm. it is not that difficult to read 2 months judgment. आप 2 months Right. के जजमेंट भी पढ़ सकते हो. Hmm. मतलब इतना टाइम आप निकाल सकते हो तो 2 or 3, केसेस का it is बैकलॉग better तो to हो cover जाएगा 3. क्लियर. लेकिन किसी का सब्जेक्ट का बैकलॉग हो तो हाउ विल दे क्लियर दैट? Subject, so first of all, I would say if this is a minor subject, read the Bayer Act. But हाँ. if it is a major subject like PIL, then you हम्म. have to watch and you have no idea. Like me, I had no idea about PIL in my college. In हम्म. our college, the syllabus was not designed in such a manner that it would हम्म. cover everything. So हम्म. I had to put time for PIL.
that you have to do. हाँ But there, तो I'm definitely sure there will be some subjects which you already know. हम्म, तो यही करना है बेटा, है ना? Mhm. यही ध्यान रखना बस। सिंपल ट्रिक है, जो इजी छोटे सब्जेक्ट्स है, डू डू देम फ्रॉम द Bare बेयर X. एक्ट, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पढ़ने वाले सब्जेक्ट है। उसमें भी यू डोंट हैव टू रीड द बेयर एक्ट एंड टू एंड, वो पूरा पूरा पढ़ने की Mhm. जरूरत नहीं है। रीड द इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड मूव ऑन। But for the important subjects, for the major subjects, अगर questions अगर Mhm. बिल्कुल clueless हो तो लाइव क्लासेस स्किप नहीं करनी है, वो तो पढ़ना ही है। साथ में बहुत सारे मैराथन यूट्यूब पे है ऑलरेडी, Yes, एनईएसी marathons, के ही right. बहुत सारे मैराथन है, वो भी वॉच कर सकते हो। Yes, I was about एंड to come to this only. Like one shot videos and marathons, हाँ, those are the last minute help. यस। और मैं यही बता रही थी कि शायद ऑल्सो मेंशन्ड अ वेबिनार, तो वेबिनार कब होने वाला है और वो क्यों अटेंड करना चाहिए किसी को? Hmm. Webinar may I would share an overall preparation strategy. हम्म Means how I started, if I ever felt burnt out, how did I recover, and how I stayed motivated when I scored less in the mocks. हम्म हम्म Then the mistakes which I made and how to हम्म avoid those mistakes. I would share all these, and also besides that, I would share a detailed overview of how to browse into a particular website that can help you in your case loss preparation. It's a very good website, and I would show you that by sharing my screen. सैन अपनी And and सीक्रेट टिप्स बताने yes, वाला है secret, and also a वेबिनार few में। secret notes. सीक्रेट नोट्स भी, वाह! तो वेबिनार होने वाला है, फ्री Actually, वेबिनार है। not notes, but note making tips. हाँ, Sorry, I would say. तो वेबिनार 1 अगस्त को होने वाला है, फ्री वेबिनार है, तो वो अटेंड जरूर करना सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Mhm. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली schedule रिविजन मॉक टेस्ट एनालिसिस, द कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो गेटिंग लो डे बाय डे। No need to lose confidence. The नहीं, ये way, पॉइंट पे तो नहीं लूज करना चाहिए, अभी तो जुलाई चल uh, रहा है। keep attempting mocks. I would say keep attempting mocks and try to get better, not in comparison to others, but in comparison to yourself. दैट्स द Try to गोल्डन score रूल। more than what you scored last. दैट्स द गोल्डन रूल। पिछले मॉक Yes. में जितने भी आए हैं उससे ज्यादा स्कोर करना है नेक्स्ट मॉक में, बस यही एम के साथ मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, नथिंग एल्स। That's the अपना only रैंक चेक motivating मत करने के factor लिए that नहीं। kept me going. सॉरी सॉरी। That's the only motivating factor that kept me going. I would always try to beat my own score. यही करना है। एंड मैं बस वही फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि साइंस स्टार्टेड गेटिंग मार्क्स इन 80s एंड 90s और हंड्रेड्स व्हेन ही स्टार्टेड, ही आल्सो स्टार्टेड गेटिंग मार्क्स इन 40s, इन Yes. 50s। तो 40s 50s में ही था, बट व्हेन यू compete विद योरसेल्फ तो फिर आप अपने मार्क्स बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हो, ना कि बाकी सबके कितने आ रहे हैं, उसमें तुम्हारा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तुम बहुत बाद में करते हो, एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। बट ये वाला स्टेज पे यू डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद अदर्स, यू डोंट कंपेयर योर रैंक्स विद अदर्स। Right. ठीक है, एक और And क्वेश्चन है। okay. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। Yes, I was saying that हाँ, your scores would fluctuate. Scores will keep fluctuating depending on the paper, depending on the difficulty level of each द paper. बुक्स। Because yes, so no need to get disheartened by that. Suppose in one mock you scored 80 and the next mock you will be scoring 70. It happens. It happened with me too. No need to get disheartened about that. मॉक्स का तो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग ही होता है, इजी मॉक्स भी Mhm. होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, Right. डिफिकल्ट भी होता है। तो अगर पहले मॉक में 80 आ गए फिर 70 आ गए, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है। अच्छा, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वंशिता का है सायन। शी Mhm. इज सेइंग कि हाउ मच स्कोर इन मॉक्स वुड यू काउंट एज गुड, एंड आफ्टर हाउ मेनी मॉक्स यू फेल्ट नाउ आई कैन डू वेल इन क्लैट पीजी। Even after attempting 50 mocks, at some point of time, I had that confusion. I was skeptical whether I'm still ready or not. ओ, So that happened. Yes, because there used to be some difficult mocks which would bring down your motivation level, your confidence level to this much. So no need to worry about that. And sports, I would say around 80s to 90s is excellent. Even if you're scoring around above 75, that's also excellent.
But if you are targeting PSUs, 85 plus is a must in any kind of difficulty. No matter how much easy or difficult the paper is, 85 plus is important for PSUs and also for top tier law schools like NLS and also. Perfect. Perfect. So if you are scoring, yes, ma'am, Huh, 1 point huh. out of 10 to 15 mocks, if you have scored 80 in at least 5 or 6 of the mocks, you are good to go. That means you have that capability of doing. और वो इनिशियली नहीं आएगा, मैं फिर से बस यही बता रही हूँ ना, Hmm. इनिशियली नहीं आएगा. यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 15 16 20 मॉक्स, तब जाके आप 80 पे पहुंचते हो, तब जाके आप 70 पे Hmm. पहुंचते हो. तो Right. डोंट think that from day one you will start getting marks in 80s and 90s. And if you are getting marks in 80s and 90s in LEAC mock, leave a comment, we want to reach out to you. Sayan, एक क्वेश्चन और है, हाउ टू Yeah. हैंडल PIL, सिंस यू ऑल्सो सेड दैट. Yeah, right. हाँ, this is from Lapkush. So you also said that PIL was your weak link, है ना? How did you Right. manage PIL? How did you do PIL? How did you approach the subject? Okay. So, and I watched the videos of LESE by Priyanka ma'am especially. So, the videos almost covered everything. And now coming to the case laws, the PIL cases of ICC and ICJ, हाँ, Ayushi ma'am helped a lot in that. She used to design some modules where she would put all the important cases, all the recent cases of ICC and ICJ. And also there's a case list of cases of PIL, means all landmark cases that is available in the LESE website, it's LESE portal. हाँ. So you will find that that's enough for covering the cases. If you cover that, you will be able to answer any questions from PIL relating to landmark cases. But if I go by the last year's paper, Hmm. is the paper which I attempted, and not I won't boast about it, but I scored 10 out of 10 in the PIL passages. Yes, there were two passages from PIL, and in both of them I scored 5+5. Wow. So in How? uh, I don't know how, but that passage means that yes, in this year 2026, the answers were answerable from the passage itself by reading the passage, and also a few percentage of guesswork had to be done for some answers, and luckily all those guesswork did work. Very nice. Mhm. ठीक है. इसके बाद क्या क्वेश्चन है? अच्छा, देख, एक क्वेश्चन और अच्छा है. अक्षत सिंह इज आस्किंग, हाउ कैन आई एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हेन आई एम कंफ्यूज्ड इन टू ऑप्शंस? Okay, okay. So when you are confused between two options, you have a 50% probability of getting it wrong or getting it correct. So I would say this is the best time to take a good guess. You have to guess this. You can't skip this type of questions. Now, which option to choose, that I can't tell you. If it's you have to choose option A or option B, then you have to use your own brain and see which option feels good or which goes well, means which fits this question or which you think may be this option. Or if you have read both the options, means if you have read the question before, you know the answer but you have forgotten it. Try to remember it. पता That's है, all I can say. यही चीज ना मैं बच्चों को ऐसे ही बताती हूँ कि इफ यू नो द आंसर देन दैट क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड. इफ Hmm. यू थिंक यूर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शन, दैट क्वेश्चन आल्सो हैव टू बी अटेम्प्टेड, क्योंकि उसको भी स्किप नहीं कर सकते. 50-50 प्रोबेबिलिटी इज अ Hmm. गुड प्रोबेबिलिटी. ओनली क्वेश्चंस वेयर यू आर एब्सोल्युटली Right. क्लूलेस कि ये पूछा कहाँ से है, where is this question from, I don't know anything about that question, skip only those questions. एक क्वेश्चन और है सयन, हाउ Hmm. डिड यू मैनेज योर एंडसेम्स एग्जाम्स एंड क्लैट पीजी एग्जाम टुगेदर? दिस इज फ्रॉम Okay. तन्मय. So that was not my end sem, that was my ninth semester, which हाँ. happened before CLAT PG, and that was scheduled in September. हम्म. So I had to focus for 1 month. I couldn't read anything for CLAT PG. I had to focus entirely on the exams. And I would say that that was means at that point of time, after my exams got over and when I started preparing for CLAT again, I felt lost. I felt I have forgotten everything. But हम्म. yes, with a quick revision, I again got back to track. And yes, after attempting two or three mocks, I got confident that I still remember.
I thought that I had forgotten, but I actually remembered those everything. हम्म, Yes, that's all. It हाँ depends actually. हाँ I, प्लीज actually, प्लीज some people can manage two things side by side, which I couldn't हाँ do. Like in my routine, I used to keep only one subject for a stretch of 15 to 20 days. I can't club it up with another subject. Some people do read two or more subjects side by side. I couldn't do that. And that depends from person to person. That varies. क्लास में अगर मतलब बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आल्सो समथिंग व्हिच कम्स अप एवरी टाइम वी प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी तो हाउ डू आई आस्क द स्टूडेंट्स टू हैंडल इट इज कि तुम्हें तुम्हारा एंड सेमेस्टर का मोटा मोटा मंथ तो पता होता है ना कि ये इस टाइम Mhm. पे आएगा, दिसंबर में आएगा या फिर जून में आएगा या जुलाई में आएगा, ये तुम्हें टाइम पता होता है ना कि सेमेस्टर एग्जाम कब आने वाला है। उसके पहले पहले बहुत बहुत ज्यादा तैयारी कर लो क्लैट पीजी की, सो दैट जब एग्जाम आने वाला हो ना तो कम से कम 4 से 5 दिन पहले यू आर ओनली एंड ओनली फोकस्ड ऑन योर एग्जाम्स, यू आर नॉट इवन टचिंग क्लैट पीजी सब्जेक्ट्स। लेकिन उसके पहले यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव टू पुट इन मोर आवर्स। तो वो काम आपको करना पड़ेगा, वो मेहनत आपको पहले से करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स एज वेल, कॉलेज एग्जाम्स एज वेल। So next question is, this is from Havisha Yadav. Question is, from where did you cover your judgments? Judgments पढ़े कहाँ से थे? So there's a secret website which I'll be sharing in the webinar, I already said. And other than that, the LEAC modules that provides 12 judgments for each month. I covered it from there only. And then again, newspapers are there. And like in my last interview, I said that mocks also cover few of your judgments. The more mocks you attempt, you will see that you have already completed 50 to 60 judgments from those mocks itself. एक क्वेश्चन और है, ये कुमार अतुल का है। Hmm. कुमार अतुल का है। क्वेश्चन ये है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्लैट पीजी के कहाँ से Yes, so past year question papers are already available in the CLAT PG website, means consortium website. You can download it from there and solve. Otherwise, LESU has also provided them in their portal. You कर? can also attempt it from there. और ना एक क्लैट पीजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक भी है, हाँ, बुक भी आई है। थिंक। वो नहीं Can पता al- होगी, अगर नहीं पता होगी तो मैं कमेंट में भी ऐड करवा दूंगी। वो बुक का वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो Yes, उसमें in that प्रीवियस book you ईयर will पेपर। find, yes, हाँ in that book you will find the questions subject wise. That is हाँ, also very helpful. वो भी Whenever है, you are doing a प्लस बहुत particular, अच्छे उसके आंसर्स भी बहुत मतलब जैसे हम मॉक में बताते हैं ना सर, उसका आंसर जैसे एक्सप्लेन करते हैं तो सिमिलरली हमने वही वहां बुक में भी वैसे explanation दिया है। अच्छा है. हाँ हाँ, ठीक है। And whenever you are doing a particular subject, attempt those subjects, I mean, the previous year questions from those subjects from the LEC book यस। after अ, every. और कुछ छूटा है क्या? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन और है, ये मधुर का है। क्वेश्चन ये है, शुड वी फोकस ऑन न्यू और ओल्ड लेबर लॉ? इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ पीएसयू टू रिक्विट? रिक्विट, Recruit, I guess. अच्छा रिक्रूट, ओके। Recruit. So if you are going into, means if you are trying to get into PSUs, you must know the new labor codes that may be asked in the interview. But for CLAT PG, there is very less possibility of you being asked the question, the section numbers. And apart from that, the old labor codes and the new labor codes are more or less the same. Only the section numbers have changed. The codes, means many acts have been absorbed in 4 labor codes. So it's not possible. I would say it's not possible to cover all the acts in the form of labor codes at this moment. So just read the main acts, factories. ठीक, ये एक क्वेश्चन और है, ये तन्मय का है। ही इज आस्किंग, हाउ डिड यू प्रेफर गिविंग योर मार्क्स, ओएमआर शीट में या फिर पोर्टल पे, जो एलईसी का पोर्टल है उसी पे? This is a very good question, because when you do not attempt in OMR sheet, you cannot actually you cannot get an idea of the actual time that you are needing, because filling up the OMR sheet takes up more than 10 minutes. So it's हम्म obviously
very much important to attempt at least 5 or 6 mocks Hmm. towards the end in OMR sheet. When I started, I would attempt the mocks in the portal itself, but during the last few months, I did attempt them in OMR sheet. Hmm. This is also very important. Hmm. भूमिका का क्वेश्चन है सायन, you are from which university? Okay, so I am from Calcutta University, Department of Law, Hajra campus. ठीक है, ठीक है. We have a question from motivation चाहिए. Hello, my name is Shri. Want to join LLM1 only English batch, but there are certain question comes in mind, which is any tip for self to self motivate, and is this a long process and many time you feel tired? Yes. So ये lack of motivation वाला question तो हाँ. बहुत real question है. That happens. That is the question which comes in the mind of every aspirants. You will feel demotivated sometimes. No need to worry. Take some rest. At least take a few days gap. Listen to music, which I did, and then again come back. मुझे ऐसा लगता है, पता है कि इफ यू फील वेरी डीमोटिवेटेड ना, रीच आउट टू योर फैकल्टीज. पता है, रीच Hmm. आउट टू योर फैकल्टीज, रीच आउट टू योर मेंटर्स, क्योंकि we know how to handle your demotivation. We know how to set you back on track. We know how to give you the war cry. We know how to, make you engrossed in studies. We know how to do that. मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज अगर एलईएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं पर्टिकुलरली कह रही हूँ, अगर Hmm. तुम में से किसी के भी साथ हो रही है ना, रीच आउट टू योर फेवरेट फैकल्टी एंड आस्क Yes, फॉर देम कि बताओ मुझे क्या करना है, मैं बहुत I would say परेशान book a हूँ. mentorship session with the हाँ. faculties and हाँ. talk to them face to face, and they would solve all your issues. एग्जैक्टली exactly. तो मतलब ये वाली चीज तो मुझे लगता है कि बहुत रियल प्रॉब्लम है. एंड Hmm. सेल्फ मोटिवेट करना है तो वन और टू थिंग्स दैट आई डू इज दैट कि अ, जैसे आज ही ना आई टुक अ क्लास ऑफ केस लॉज. तो हाँ. केस लॉ की क्लास के बाद ही मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए केस लॉज पे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर एवरीथिंग, all 15 questions. So that is kind of self motivation, right? Ki you read something and you're able to answer those things. So do this ki, for example, you have read constitution, try to answer questions from constitution only. एक बार वो होता है ना, 70-80% आंसर Hmm. सही देने लगते हो तो वो मोटिवेशन आने लगता है कि हाँ सही तो हो रहा है, पढ़ रहा हूँ तो जवाब तो दे पा रहा हूँ. और बस यही माइंड को बार बार बताना पड़ता है. Yes, absolutely. Attempt mocks. Whenever you feel demotivated, attempt 1 or 2 mocks. Or you can also attempt sectional questions. If you feel that you are not, you are tired to attempt a 2 hours long examination, 2 hours हम्म. long mock, you can just attempt the sectional papers of 30 marks. हाँ. तो एलईएसी में ही 30 मार्क्स के ना अलग अलग से सब्जेक्ट Hmm. टेस्ट भी होते हैं. Portals में है. हाँ, पोर्टल पे ही है, सब्जेक्ट टेस्ट है. तो एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसी का टेस्ट दो. पूरा मॉक नहीं अटेम्प्ट करना है, कुछ तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. वंस यू आर डन विद 4-5 सब्जेक्ट्स, देन अटेम्प्ट द फुल लेंथ मॉक. ठीक है. मेंटोरशिप सेशंस आर ऑलवेज रियल प्रॉब्लम है भाई ये. मुझे मैसेज करना बचता, मैं कॉल करूंगी तुमको, ठीक है. अंकित कुमार का है, मैम इवन आफ्टर रिवाइजिंग नॉट एबल टू टैकल क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दूं तो इट इज लैक ऑफ रिविजन ओनली. अंकित, Ex- ट्रस्ट मी, इट इज लैक ऑफ रिविजन ओनली. एक बार पढ़ के अगर नहीं दे पा रहा है ना, तो दोबारा पढ़ और फिर से दे. दोबारा पढ़ के कुछ क्वेश्चन तो ज्यादा दे पाएगा. अगर फिर भी नहीं दे पा रहा है तो तीसरी बार पढ़ो फिर दे. एंड ट्रस्ट मी, बाय द थर्ड टाइम, क्योंकि एवरीवन हैज देयर नंबर. मैं जब तक 3 बार चीजें पढ़ना ही लेती तब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील करती. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. कि एक बार पढ़ के ही हो गया, 2 बार पढ़ के हुआ, या 3 बार पढ़ के हुआ. क्योंकि मुझे लगता है जनरली सभी को 3 बार पढ़ के चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में भी जाती है, एंड यू आर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू आर एबल टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इस पे एनीथिंग यू वांट टू से? Yes, ma'am. I would like to say that revise in parts. No need to हम्म. cover the entire subject at once. हम्म. Suppose taking the example of Constitution, at हम्म. first read part one, that is till 51A, हम्म. and then attempt questions only from those parts. Like if you're following any book which gives question section wise, that is article wise,
then attempt only the first few questions and see if you are able to answer them, and then move to the next part and again attempt questions from those parts. I think this will help. And एक also, क्वेश्चन और है. हाँ हाँ, uh, प्लीज प्लीज गो. 1 minute. Also, you can follow another strategy. That is, first check what questions are being asked. Attempt the mock, attempt any of the question papers, whatever you want, and check what questions are being asked, and then revise accordingly. एक क्वेश्चन और है सैन, मतलब दो क्वेश्चन है, सिमिलर से ही है. एक तो ये Okay. है कि फोर चार पांच ऐसे सब्जेक्ट्स बता दो विच आर नॉन नेगोशिएबल, वो तो पढ़ने ही है, वो तो स्किप ही नहीं कर सकते. एंड दूसरा है मेन सब्जेक्ट्स टू स्टडी. ईशा और निमला दोनों का क्वेश्चन है, तो सिमिलर काइंड ऑफ Constitution and क्वेश्चन है. jurisprudence can't be skipped. Constitution, jurisprudence, public international law, and the subject where I made mistake by taking it lightly, that is Contract Act, and of course the कॉन्ट्रैक्ट नहीं criminal पढ़ा. laws. No, I read that, but I thought I was too confident. But some question means a question was asked. How many exceptions are there in this particular section? I didn't go in that much depth actually, so I made a mistake in that question. दैट्स ओके, एक आध क्वेश्चन तो हो जाता है, And इट्स ओके. also environment. They are focusing on environment a lot since the हाँ last few years. हाँ. तो दीज आर सब सब्जेक्ट्स जो बिल्कुल बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है. इसमें आई वुड आल्सो ऐड बीएसए. मुझे लगता है Yes, बीएसए से भी yes. बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और बीएसए में भी लास्ट वाला पार्ट स्पेशली, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रेलेवेंसी से ज्यादा एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं. अह, ठीक है, एक क्वेश्चन आदित्य का है. क्वेश्चन ये है कि डेमोस तो अच्छे लगे लीगल एज आफ्टर कॉलेज के, लेकिन पूरा सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा 4 मंथ में. Yes. They do cover it. Four हो can जाता है. why four? They even cover it in 3 months. Okay. एग्जैक्टली हो जाता है, 3 महीने के Also, लिए हो their जाता है, 1 महीना तो रिवीजन recorded करवाते हैं. videos are available. Recorded हाँ. videos are already available. You can cover it according to your own pace if you हम्म. want. क्रेविंग अलर्ट का क्वेश्चन क्या है? आई हैव वॉच डेमो क्लासेस एट टॉप रैंकर्स, दे वर क्वाइट हेल्पफुल. इज दिस अ राइट टाइम टू ज्वाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच और एम आई लेट टू केटर द सिलेबस? सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी ले सकते हो, उसके अपने फायदे होते हैं. आरएसएम वगैरह घर पे मिल जाती है. बाकी क्रैश कोर्स आने वाला है गाइस, पता है? थर्ड अगस्त को क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है. तो अब अगर एडमिशन ले रहे हो तो क्रैश बैच में भी ले सकते हो. उसमें आरएसएम नहीं होती है, बस हार्ड कॉपी आरएसएम नहीं होती है, लेकिन मतलब सिलेबस तो दोनों में कवर होता है, प्रॉपरली कवर होता है. अच्छा, तन्मय का Yeah. एक और क्वेश्चन है. हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट? सैन बताना जरा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 120. भाई All. मैं सारे स्टूडेंट्स को कह के मना कर चुकी हूँ कि सारे नहीं अटेंड करने होते, नहीं अटेम्प्ट करने होते. लेकिन ये भी, और लास्ट ईयर की जो टॉपर थी हमारी अरुणिमा, शी आल्सो अटेम्प्टेड 120 क्वेश्चंस. But खबर. ma'am, when the paper is easy, you दो feel that क्वेश्चन if you छोड़ दो, leave तीन one क्वेश्चन छोड़ question, दो. नहीं, सारा अटेंड if कर. when the paper is easy, you feel that if you leave even if you leave one question, someone else would cross you. ये होता That's है the pressure. Yes. कंपटीशन. Mm. Because अच्छा, the paper एक was और. easy, na? हाँ, पेपर इजी है तो And, फिर यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यस. no, I would अच्छा, still not recommend to attempt all the questions. you Different have people have attempted all the questions, now because you that are. strategy was working for me. It's not that it will work for everyone. हाँ, I ये have है. tried and tested both the strategies in the mocks, and हम्म. every time attempting more worked for me. तो दिस इज समथिंग विच This एवरीबडी may हैज not टू work फिगर for आउट फॉर everyone. That's a देमसेल्व्स. caveat I would like to say. ठीक है. अह, ईशा पूछ रही है कितने घंटे पढ़ते थे सयन? 5 to 6 hours. There was no fixed such studying time, studying hours. Around 5 to 6 hours, and yes, 1 hour for judgments every day. That was non-negotiable. 1 hour for judgments you have to give. 1 घंटे में हो जाते हैं काफी सारे जजमेंट्स. Hmm. एक क्वेश्चन क्या है? कोई डिस्काउंट अवेलेबल है क्या? एक नंबर दे रही हूँ, 6363286363. इस पे कॉल करो एंड पूछो, कुछ होगा. आज तो बहुत अच्छा दिन है, हिस्टोरिक डे है, आज तो कुछ होगा. आज कॉल कर लो. शालेहा का क्वेश्चन है, हाउ टू सब्जेक्ट स्टडी लाइक jurisprudence and PIL, because when I go to give mocks I face difficulties in this subject even after studying those topics, as I always come across new question.
Okay, so there's a video of legal age available in the YouTube channel of jurisprudence. That's where I read it from. They have shared their notes also, and that's a very good concise notes. That will cover the basics of jurisprudence. Like all the schools would be covered and the main jurists belonging from each school. Read them properly at first. Then attempt mocks, and you will find that most of the answers are being answerable from the passage itself. If you read the passage, you will be able to answer. But few questions like difference between positivist and naturalist school, the Hartfuller debate, all those, and those are very core concepts and have been taught a lot of times by legal age. You should know them. Otherwise, I think it's doable. Jurisprudence questions can be doable by reading the passage itself. They are more or less logical rather than facts or factual. And yes, PIL, right? Another question did here हाँ. is was about PIL. PIL also this year I found that the question was logical. The all the 10 questions were logical and were answerable from the passage itself. But in few of the previous years, they did ask some tough questions directly from judgments. They gave the facts of the judgment and asked which judgment is it is. So, and there can be two options. One is nobody would know either, or if even if people know, that would be a very small number. 2 or 3 people would be able to answer. So it's better to leave those questions if you don't know at all and read the basic judgments, the basic landmark judgments from PIL that are already available. Yes, that are already available in the Legal Age website, and also videos are there on YouTube. I think that should be enough for हाँ. PIL and भाई jurisprudence. पीआईएल से डर बहुत लगता है, लेकिन वंस यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग इट I ना, was तो also actually very इतनी afraid चीजें of हैं उसमें PIL. पढ़ने के लिए, इतना बड़ा नहीं है वो, छोटा सब्जेक्ट है. इफ यू रीड जस्ट द इम्पोर्टेंट बिट्स एंड पीसेस, तो मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी कवर्ड देयर, मोस्ट ऑफ योर आंसर्स यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर. बाकी बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो एक्चुअली पैसेजेस से भी वो हो सकते हैं. एंड अगर एक दो क्वेश्चन फिर भी नहीं बन रहा है आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर 1 or 2 क्वेश्चन, देन दैट्स ओके. इट्स ओके टू नॉट आंसर 2 क्वेश्चंस. Like in AILET, this time questions from jurisprudence were very tough. And क्वेश्चन है. ma'am, I think I got disconnected for. नहीं नहीं, ठीक. Okay. एक्सपर्ट हेड का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. ईशानी है, ईशानी का क्वेश्चन अच्छा है, सयन सुनना है ना. Hmm. क्वेश्चन इज कि क्लैट पीजी में देयर आर ऑफन क्वेश्चंस पैसेजेस बेस्ड ऑन अ जजमेंट, एंड सम ऑफ दीज जजमेंट्स यू हैव नेवर केम अक्रॉस. तो एकदम सरप्राइज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कि ये जजमेंट तो पढ़ा ही नहीं है. हाउ डू यू आंसर दोस पैसेजेस, हाउ डू यू आंसर दोस क्वेश्चंस? Yes, there will be questions from judgments which you have never read. And if you read the passage, you will get to know the gist of that judgment. More or less, you will get to know what was the ratio of that judgment and what it was trying to say, what the judgment is trying to say. And if you get to know that, if you get a hold of that, you will be able to answer all of the questions. And yes, for this, I would again say that improve your reading speed. क्वेश्चंस ना बहुत लॉजिकल होते हैं बेटा. Hmm. क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जो पैसेजेस में जो तुमने नहीं भी पढ़े हैं, दोज आर वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. इफ यू रीड द पैसेज केयरफुली, यू विल बी एबल टू फाइंड सम आंसर्स देयर. मे बी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर all 5 questions out of that passage, but you will be able to answer at least 3 questions if you read the passage well. And if you logically answer, you will be at least able to get 3 correct answers from that passage. तो ये वाली चीज तो मान के चलो कि सरप्राइज पैसेजेस आने वाले हैं, ठीक है. लेकिन दोज आर सॉल्वेबल पैसेजेस. एक क्वेश्चन है सयन, तुमसे पूछा गया है, इसलिए आई वांट यू टू आंसर दैट. हेलो सयन, आई एम इन माय 6th semester. इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद लीगल एज, और should I join next year, as I have discussed with counselor that legal is provided 2 years batch. So we have also started our 2 year batch from last year. तो 2 साल के बैच में एडमिशन लेना चाहिए, 6th semester में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यू टेल. 6th semester, I'm assuming you are talking about 5 years BLLB 6th semester. Yes. Yes, of course, it is the right time. And if you start this early, you have a possibility of making a great rank. AIR 1. Yeah. 2 year स्टूडेंट से तो मैं यही कहती हूँ कि भाई तुम AIR 1 टारगेट करो. तुम्हारा गोल इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड, तो तुम AIR 1 के लिए ही टारगेट करो, ठीक है. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेते हैं, इसके बाद
we'll end this session. Approach for judgment. Sayan will be discussing his approach, his secret website he explored for judgments, his tricks to make notes of judgment. ये सारी चीजें Sayan will discuss in a webinar. Webinar का link pinned comment में भी होगा, and webinar का link इधर chat box में भी already है. ये वेबिनार फ्री वेबिनार है, एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन ये होने वाला है 1 अगस्त को, तो तब भी मुझे चाहिए कि तुम सब लोग आ जाओ. ठीक है. ठीक है, एक और क्वेश्चन है साइन रिवीजन की रिगार्डिंग ही है कि मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस हो गया है लेकिन रिवीजन और क्वेश्चंस में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. Okay, so if the major part of your syllabus is done, and start attempting mocks and revise from the mocks itself. Mark those questions where you are getting wrong, where you are going wrong, and revise those particular part of that subject, and also the attached parts, or I would say the similar parts of those questions. Then Okay. एक क्वेश्चन और है, Hmm. एंड आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन है, whenever I read judgment it takes 1 hour to complete 4 judgments. 1 घंटे में मैं 4 जजमेंट्स कर पाता हूँ, 20 minutes per judgment. Am I investing too much time in these cases? Actually you are investing too much time, because I think you are trying to read the entire judgment. Entire And of at this your. point of time, although this is good, but at this point of time, I think this would create trouble. At this point of time, you should focus only on the important ratio of the judgment and the tips, the trick regarding which I would be sharing in my webinar. How to cover more judgments in lesser time. That's nice. तो ये वाला वेबिनार में अटेंड करना है, ठीक है. ठीक है, I think we have taken almost every question. Most of the questions were about revision. Most of the questions were about completing syllabus. PIL and jurisprudence are subjects जिससे अभी भी डर लगता है. तो मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट भी करके चली जाती हूँ. PIL एंड jurisprudence का मैराथन लाइव, फ्री लाइव मैराथन यूट्यूब पे भी करवा दूंगी मैं फटाफट. ठीक है. तो अगर तुम एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में ये लिख देना. ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में सयन के वेबिनार की भी लिंक पिन कर रहे हैं. आज एक 6:30 बजे भी मैं वेबिनार लेने वाली हूँ जहां पे आई एम गोइंग टू टीच यू टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2026. वो भी फ्री वेबिनार है, ठीक है. इट इज एब्सोल्युटली फ्री, तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा इनफैक्ट, वो 10 केसेस वाला. तो मेक श्योर दैट यू अटेंड द वेबिनार ऑल्सो. द लिंक विल बी इन द पिन्ड कॉमेंट, द लिंक इज हियर ऑल्सो इन द चैट बॉक्स. ठीक है. तो आई विल सी ऑल ऑफ यू. फ्री वेबिनार है, पढ़ के जाओ, थोड़ा सैटरडे का फायदा उठाओ, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ. एंड सयन का वेबिनार होने वाला है 1 अगस्त को. डू नॉट मिस दैट, ठीक है. मिस नहीं करना है. बहुत पूरा वेबिनार का जो मेन थीम है ना, वो जजमेंट्स ही होने वाला है मेजरली. तो वो अच्छे से करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे एग्जाम प्रेप का. तो उसे कैसे इजी बनाया जाए, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द वेबिनार. एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं आज के लिए, क्वेश्चंस हो गए हैं. सो थैंक यू सो मच सयन. बहुत अच्छे से यू हैव आंसर्ड. एंड आई थिंक वही ना कि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बोल बोल के थक जाऊंगी कि पढ़ाई करो, ये करो वो करो, लेकिन बच्चे मेरी नहीं सुनेंगे. लेकिन बिकॉज यू हैव क्लियर दिस एग्जाम, तुम्हारी जरूर सुनेंगे. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू सर्व देम एज अ रिमाइंडर कि भाई अभी भी टाइम है, हो जाएगा. एंड ऑल्सो अ मोटिवेटिंग वीडियो कि हो जाता है, क्लैट पीजी क्लियर है ना, इतना टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है. Hmm. Also, before ending, I would like to say one more thing. Many people would suggest you that you should quit social media during this time, and social media is not good for studies. But in my webinar, I would uh, comment on this, or I would say something about how social media helped me actually in preparation. They do actually help you if you tune it properly, if you uh, tweak your algorithm in such a way, it can actually benefit you. That I would share in details in my webinar. सोशल मीडिया भी यूज हो सकता है क्लैट पीजी तैयारी के लिए. ऑल राइट. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन वेबिनार नेक्स्ट वीक, है ना. Hmm. एक हफ्ते में तुम्हारी जितनी जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सारे लेकर आ जाओ. सैयद विल आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस एज वेल. ऑल राइट. थैंक यू सो मच गाइज. Thank you, everyone. Keep preparing well. All the best for your CLAT PG preparation.